Hello friends, today we're gonna learn about coordinate geometry for class 9, and I'm gonna briefly cover few of the topics that we're gonna cover as part of coordinate geometry for class 9. As you can see on the introductory page itself, I have highlighted a couple of things, and this is basically the crux of coordinate geometry over here. And giving a quick introduction, uh, uh, welcome to Adhyayan, and this is a platform where you can learn about mathematics and history in a way that clarifies your concepts and help you understand in a better way. Now, Adhyayan is basically created as part of an initiative for people who wanted to or who has difficulty in understanding few things or few concepts. We are here to make your life easy in that regard. These sessions are gonna be bilingual, so I'll talk in English as well as in Hindi for making sure that people are all comfortable with all sorts of language. And let's get started on coordinate geometry. So दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानने के लिए आपको जो चीजें जाननी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे एक पॉजिटिव एक्सिस, एक नेगेटिव, एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिन पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे एब्सिसा क्या है जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे, ऑर्डिनेट क्या है जिसके बारे में हम फिर से जानेंगे। बेसिकली अभी एक क्विक इंट्रोडक्शन के लिए इतना बता सकता हूँ कि एब्सिसा कोई भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे पॉइंट है, ओरिजिन जो होता है वो एक्सिस का बिगनिंग पॉइंट होता है, और पूरा का पूरा जो ये प्लेन आप देख रहे हैं, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, इसमें चार भाग हैं। जैसे पहले पार्ट को हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, दूसरे को क्वाड्रेंट 2 कहते हैं, तीसरे को क्वाड्रेंट 3 एंड चौथे को क्वाड्रेंट 4 कहते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 quadrants: quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4, and it has also 4 parts to it. Like, one is the positive horizontal direction, one is positive vertical direction, one is negative horizontal direction, one is negative vertical direction. Right now I'm not going into the concept of axis, बट हम आगे चल के जानेंगे कि अ, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, बेसिकली दे आर कॉल्ड एज एक्सिस. सो विद दिस क्विक इंट्रोडक्शन, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट इट. सबसे पहले we will try to understand the variable क्या. Variable can be any letter, or generally represented by, variables are generally represented by any letter in English which can take any value. Generally, it is written like X, Y, Z, P, Q, D, C, anything, anything. ये कुछ भी हो सकता है, और इस ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिट तक. इवन नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस इन्फिनिटी. फ्रैक्शन वैल्यूज भी ले सकता है, 2/7, 3/7, 7/22, ऐसे कुछ भी वैल्यू ले सकता है. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे वेरिएबल को. जैसे आप समझ लीजिए कि आपके 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 होम टाउन में, आप जहाँ आप रह रहे हैं, और लेट्स से वहाँ का टेम्परेचर, अगर आप सुबह के 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे का टेम्परेचर अलग होता है. लेट्स से अमूमन 28 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप 6 बजे उसी को देखेंगे
तो शायद 30 डिग्री तक हो जाता हो. And by noon, uh, it generally comes to 32 or 33 degrees centigrade. And in the evening, let's say in the afternoon, it again drops down to, or let's say 2 p.m., it still stays at 31 degrees centigrade. And at in the evening, let's say 5 p.m., it drops down to again somewhat around 30 degrees centigrade. And then at 6 or 7 p.m., it drops down to, let's say, 28 degrees centigrade once again. Now, how this particular thing is coming together. Now, you have temperature, you have time, and you have temperature. Now, time is 5 and temperature is 28. Time is 6, temperature is 30 is 5 a.m., temperature is 28, and time is 6 a.m. and temperature is 30. So now if you see at 12 p.m. it is 32 and so on and so forth. I don't have to write it once again. What you see over this is now if you consider time in hours, it becomes a I mean, even time becomes a variable. But for the sake of convenience, if we consider this as total day, like instead of taking for hours, if I consider it as one day, now let's say today is 17th October, and for this day, I have so many variations in temperature. So for a particular day, my temperature varies in this range. And now for that day, temperature of that day can be represented as a variable, let's say X. Now, if I have to find out, if I have to find out a relation, right, between these, so you can see that temperature of the day is X. Now, this X in itself is a variable who has or which can have values in the range of which can have values 30, 28, 32, and 31 also sometimes. But it cannot have any other value other than this throughout the day. But also I can represent temperature of the day as uh, let's say 30, or in a better way, let's say I can represent the temperature of the day as 20 plus y, where y is again another variable. Now, with respect to the value of x, if you see y, now y can only have values which will be like in the range of 10, of 8, 2, and 1. Because if you see x, the temperature can vary across the temperature can vary across these temperature numbers that you see, which is 28, 28, 30, 32, 31. And if we are trying to bind it to a relation where we are putting y as a variable of the temperature throughout the day, then we can get the value of y, which is 10, which is 20 plus 10 is 30, 20 plus 8 is 28. Uh, sorry, this is 12. 20 plus 12 is 32, and 20 plus 11 is 31. Now, you see how variables can take multiple values. And since variables can take multiple values, they are basically regarded as variables because they don't have a fixed value. Now, 20 is a fixed value, but y doesn't have any fixed value. And that's why y is a variable.
And since x is also a variable, because x is changing, x is the temperature, and it is changing throughout the day. Day is constant because it is one day, and the temperature varies, so the temperature can take multiple values throughout the day, and hence x is the since x is the temperature and is represented by x, so x can be 20, 28, 30, 32, 31. And we further break it down, like instead of telling out x is 30, 30, 28, 32, 31, we are saying y can be 10, 8, 12, or 11, which is again another variable, and satisfying the relation 20 plus y. And that is why y is also a variable. Now, coming back to another example, your age, right? Your age throughout the year, your age is constant. Now, if it is 2025, your age can be 14, right? Some of the some people's age will be 14, some people's age might be 15 or 13, depending upon which year you have taken birth. Now, but if you consider it throughout the year also, your age is not constant. Now, you don't get or jumps from the day you took birth, or from, let's say, in 2025, your date of birth is 5th of June. And when 2026 comes, on 5th of June, you become, if you're 14, you become 15 years old. Now, if you're 15, you become 16 years old. But that doesn't mean your the calculation of your age doesn't change throughout the year. Now consider 2025, and let's say at June, year is 2025. Sorry, pardon with my handwriting. Year is 2025, and age is, let's say, 14. Now, with that information, in June, your age is 14, but in July, you are already 14 years and 1 month old. Now, in August, you are 14 years and 2 months old. And in September, you're 14 years and 3 months old. So on and so forth. In probably by the time next time uh, April comes, sorry, next time May comes, you will be like 14 years, 11 months old. And these component that you see over here is the variable component based on the months. And every month you are getting 1 month older. Now, if I have to represent your age in 2025, can be represented as 14 plus x, where x stands for month, and x can take value from like 1, 2, 3. Basically, I'm trying to represent it as an OR value. So what I'm gonna do is it can take values of like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो पूरे साल में अगर आप 14 साल के हैं, तो आपका एज जो है वो हर महीने दर महीने बढ़ता जाएगा। अगर आप 14 साल के हैं जून में, और 5th जून आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो जुलाई को आप 14 साल 1 महीने के हो जाएंगे। अगस्त को आप 14 साल 2 महीने के हो जाएंगे। और ऐसे करते करते जब आप मई में आएंगे तो आप 14 साल 11 महीने के हो जाएंगे। और फिर जून के महीने में, आई मीन, ये 2026 का
मई का महीना है, और जैसे ही आप जून के महीने में एंटर करेंगे तब आप 12 साल के हो, सॉरी तब आप 16 साल के हो जाएंगे यार। वो बेसिकली जो टाइम होता है वो 14 साल 12 महीने का होता है, विच इज नॉट अ वैलिड नंबर टू रिप्रेजेंट। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप 15 साल के हो जाएंगे उस समय तक, मई 2026 तक। और क्योंकि यहाँ पे हर महीना चेंज हो रहा है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 14+x, जो आपकी एज होगी। जून के महीने में ये एक्स का वैल्यू 0 हो, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि 0 भी हो सकती है एक्स का वैल्यू। ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल हम किसी भी नंबर के, किसी भी लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंग्लिश लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, एक्स वाई जेड एबीसी के साथ रिप्रेजेंट, एबीसी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल था जहां पे एक्स का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर है। जैसे अगर, क्योंकि मंथ चेंज हो रहा है तो मंथ 1 से 12 तक हो सकता है, इसीलिए मंथ चेंज हो रहा है, और इसीलिए एक्स का वैल्यू 1 से 12 12 तक हो रहा है, और 0 से 12 तक हो रहा है, क्योंकि वो महीने में जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे मंथ 0, क्योंकि वो 0 मंथ होता है। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो एक्स एक फाइनाइट वैल्यू पे जाती है। बट क्या एक्स सिर्फ फाइनाइट वैल्यू, कोई भी वेरिएबल क्या सिर्फ एक फाइनाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है? आंसर इज नो। इनफाइनाइट वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्स में। एंड दैट इज व्हाट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स इज। Now, once we understood variables, the other important thing which we're going to understand is the number line. Now we know that we can represent a number line like this, where it has two pointy arrows going towards infinity. Infinity की ओर तक जाती है, and the center point is the origin, and then we can have number divided like this. -1, 1, 2, 3, 4, 5. -2, -3, -4, -5। अभी अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, मुझे अगर पॉजिटिव नंबर के डायरेक्शन में जाना है तो मैं जनरली राइट वर्ड मूव करूंगा। मैं जनरली, अगर मुझे पॉजिटिव नंबर की ओर जाना है तो जनरली मैं राइट वर्ड मूवमेंट करूंगा। अगर मुझे नेगेटिव नंबर्स की ओर जाना है तो ओरिजिन से, अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं तो मैं यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, तभी मैं सारे नेगेटिव नंबर्स को एनकाउंटर करता हूँ। यहाँ पे एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज कि नेगेटिव नंबर्स का मतलब हम किस तरीके से नेगेटिव नंबर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। बेसिकली मान लीजिए कि अगर आप, ये पोजीशन हो गई आपकी 0 पे। मान लो अगर आप 2 पे खड़े हैं, करेक्ट। अगर आप 2 पे खड़े हैं और लेट्स से आपको 0 तक जाना है, आपको 0 तक जाना है। 0 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके पोजीशन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 2 यूनिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, विच इज दिस एंड दिस। 2 जंप्स और टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन जाएंगे। तो हम जा तो 2 यूनिट ही रहे हैं, बट टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, जो कि हमने कहा है कि जब भी हमको नेगेटिव नंबर्स को एनकाउंटर करना पड़ेगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिविटी जो है, माइनस सिंबल, आपके मूवमेंट को दर्शा रही है। वैल्यू उसका वही वन है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 से ये 1 तक का जो मेजरमेंट है
जीरो से ये वन तक का वही मेजरमेंट है। ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मूवमेंट दैट वी आर डूइंग। क्योंकि हम जीरो से लेफ्टवर्ड जा रहे हैं और तभी हमें ये नेगेटिव मूवमेंट मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको टू पे है, आपको जीरो तक आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट पीछे जाने पड़ेंगे। क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे गए तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में गए हैं, और इसीलिए आप टू माइनस टू का मतलब टू टू में अगर आप टू माइनस करेंगे तभी आप जीरो पर जाएंगे। बट इसका एक्चुअल मीनिंग यह है कि आप दो पे थे। इस केस में आप दो पे थे और आपने 2 यूनिट पीछे गए, और आप 2 यूनिट पीछे गए, विच इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम योर पॉइंट। अगर आप 2 यूनिट, अगर मान लो आपको पोजीशन 2 है और आपको 5 तक जाना है, तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? यहां से आप 5 तक जाएंगे, इन दिस डायरेक्शन। तो 1 2 3, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 तक, क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर्स को एनकाउंटर कर रहे हैं। और आप नेगेटिव, अगर आप पीछे पीछे आएंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, तो जनरली वो नेगेटिव सिंबल के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। अगर आप यूनिट कैलकुलेट करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि ये भी 1 यूनिट है, वो भी 1 यूनिट है, क्योंकि ऑरिजिन के परस्पेक्टिव से आपकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रही है, तो हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आप राइट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे, तब हम उसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे, हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप राइट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे, तब हम उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। यही यही इसका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने मूवमेंट डिस्क्राइब कर लिया है, अभी हम इसको एक और चीज को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है क्या नंबर लाइन। हम हमारे जहन में यह है कि हमने जब भी नंबर लाइन ड्रॉ किया है, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है, या फिर हमने ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। नाउ व्हेन यू ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, now when you draw this horizontal line, basically what you are doing here is you are you what does this mean? This means that it extends towards both positive, negative, infinity. We do not have that number concept of now infinity yet, so I will avoid doing saying that right now. Okay, and let's just stick to, we go from here towards a very higher number, and here to a very higher number which is non-terminating. But the center point is the origin, and from there we go to 1, 2, 3, 4, and it can prolong till whatever value we can extend it to. Similarly, -1, -2, -3, -4, and the negativity represents the direction from the origin towards which you are moving to. Now, the same thing stands true for the one that we draw below. 1, 2, 3, -1, -2, -3, and obviously it goes without saying that we can extend it further. Now, can we only draw number lines in a horizontal way? And the answer is no. Can we not draw it in vertical also? And the answer to that is probably yes, we can. And how we can do that is we can take the same horizontal line, number line, which is like infinitely moving or to a very large non-terminating values, and we can rotate it by 90 degrees. So if you see this, for example, I am keeping this ruler. I'm keeping this ruler, and this ruler, if it represents my horizontal number line, if you see this position being the zeroth position, then this side being the -1, -2, -3, and this side being the +1, +2, +3, +4. And let's say if I rotate it by 90 degree. Now this particular line that I got
by rotating my ruler to 90 degree is again a vertical number line. And if you align the zeros, now if this is the horizontal number line, and the same number line, I mean this number line, if I rotate it, like if this number line, if I rotate it by 90 degree, if I do a rotation of 90 degree like this, now this becomes my vertical number line. Now my vertical number line is again can be drawn like this. And the point of intersection here is 0. But now a very unique thing which I got as part of this is that I have a vertical number line, and here, I'm sorry, I have a vertical number line, and here I have same set of values, like 1, since we have rotated it in this direction, right? So we probably will get all these values reverted in this order. So 1, 2, then arrow 3, then and this part will come towards this direction. So -1, -2, -3, and the arrow still goes here towards positive infinity over here and towards negative large non-terminating number. Now, once we reach there, basically, I'll keep it for your understanding. Now, we generated a system with two number lines. One is the horizontal number line and one is the vertical number line, right? And as we when we were doing number lines, we are just representing everything as a point over here. Similarly, now previously we were representing points on this specific line, but when we created this system with horizontal and vertical, we created a system that has so many points in it. Now I can not only represent point on the same line, I can represent point over here, I can represent point over here, I can represent point on this line, I can represent points all over here, and now it opens up all these points to me as well, right? So now from a one-dimensional line to we came in to representing a plane here. This is a two-dimensional plane, right? This is basic. I'm sorry. Now going from representing number points on a line, position of numbers on a line, we can now represent the position across the area of this plane. Now this, if you see, like this entire system can be further extended to till this boundary, right? And till this boundary, which means I can get everything under this, all of these. And all of these can be represented as single point. At any given number, again, given point, I can also represent this particular point and I can figure out what is the value of that point. Now to find out the value of the point, I have to see like what is the value of the y, sorry, what is the value of this point on the vertical number line and what is its value on the horizontal number line. Now we will discuss this more and we will further take one step ahead in terms of understanding how points are represented. And once you have created this particular system, this is called a Cartesian plane. And I will explain more about it in the next video. And for the time being, uh, this is the entire representation of what I have said. Now, in the next video, we will go ahead and try to understand how we can better visualize Cartesian coordinate and how the visualization of writing a point will come into picture. Till then, uh, if you didn't understand anything, go ahead, comment on the video, and we'll try to reach out to you and try to figure out the answer for your queries. Thanks for watching and have a nice day.